Hello guys, welcome back. I hope you're fine. Like always, I'm here with another useful topic, which is punctuations. So without wasting time, let's get started. So punctuation means the use of points, stops or marks to divide one sentence from another or one part of sentence from another. Punctuation का मतलब किसी भी sentence को या किसी भी सेंटेंस के पार्ट को पॉइंट्स, स्टॉप्स या मार्क से डिवाइड करना. Here we will discuss the different types of punctuations and their marks. First one is the full stop or period. Full stop या period किसी भी सेंटेंस के एंड पे लगाया जाता है. जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो उसके एंड पे फुल स्टॉप या पीरियड लगाते हैं. For example, I am going to the doctor soon. As it is a complete sentence, we will put full stop in the end of the sentence. The next one is comma. किसी भी sentence में एक से ज़्यादा categories लिखी जाएं तो उसके दरमियान comma आता है. For example, my dress contains blue, black, red and white color. The comma is used before the conjunction. For example, I called them several times and nobody answered. Here it is used to separate the sentence into a new sentence or part. The next one is semicolon. Semicolon statements को connect करता है जहाँ पे conjunction जैसे कि and, for, but, etc. नहीं लगते, वहाँ पे semicolon लगता है और statement को connect करता है. For example, we should work hard, semicolon, otherwise we shall fail. Semicolon बिल्कुल comma की तरह है. ये सेंटेंस को अलग करता है और दूसरे के साथ इसको कनेक्ट करता है. The next one is colon. अगर हमने कोई कोटेशन लिखनी हो या वर्स लिखनी हो तो हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद हम वो कंप्लीट कोटेशन लिखते हैं जिसके पहले हम कॉलन लगाते हैं. For example, the teacher said with force, we will all succeed. कॉलन को हम ज़्यादातर डायलॉग्स में यूज़ करते हैं. जब हम एक पर्सन की सेइंग्स लिखते हैं तो फिर हम कॉलन डालते हैं, उसके बाद उसकी सेइंग लिखते हैं. The next punctuation mark is dash. डैश भी बिल्कुल कॉमा, सेमीकोलन और कॉलन की तरह है, लेकिन ये सेंटेंस के मीनिंग को मोर फोर्सफुल करती है. For example, I can't say who disturbed me. Lucy, Kylie or Nina. The next one is hyphen. Hyphen two words को join करने में यूज होता है. For example, an 8-year-old boy is flying his kite. The other one is exclamation mark. जब हम खुश होते हैं, हम गमी महसूस करते हैं, हम सरप्राइज्ड हो जाते हैं, इस तरह की इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए exclamation mark यूज होता है. For example, what a beautiful morning. I am expressing the joy in the sentence and exclamation mark is there. The next one is question mark. क्वेश्चन मार्क हम किसी क्वेश्चन के एंड पे लगाते हैं. जब कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसके एंड पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं जिससे पता चलता है कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं. For example, what you gonna do? It's a question and we'll apply the question mark in the end of the sentence.